Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 90 for that topic sexual reproduction in flowering plants. Now we have just studied double fertilization in flowering plants, one of the unique character that you know. Okay. Then now we have started the study of post-fertilization events and structures. Okay. After fertilization, what happens that I have summarized in the last video. So please refer to that. We have seen there that 4 things are there going to happen. One is particularly that embryo formation. Okay. Then second is the endosperm formation. Third is the seed formation. And fourth is the fruit formation. Okay. That out of that, all that things almost happen simultaneously. Embryo formation, endosperm formation, then that seed formation and fruit formation. So we have seen in the last lecture that endosperm is developed from that particularly primary endosperm cell. That PEC which is developed there, okay, that is a triploid cell, you know. Primary endosperm cell, that is triploid cell. It is formed by what? It is formed by fusion of one male gamete and central cell having 2 haploid nuclei in the embryo sac. And since 3 nuclei are there, haploid, it is called as the triploid cell. It is called as primary endosperm cell, PEC. So this goes on developing into endosperm of the seed. And zygote will develop into the embryo. And my friends, both the development occurs simultaneously. Can you think that embryo and endosperm, why they develop simultaneously? ये एक साथ ही उनकी development होने लगती है at same time. So what should be the reason? The reason is very clear that developing embryo requires energy, nourishment, and that is provided by whom? That is provided by the endosperm cells containing reserve food material. तो एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है, that energy will be provided by the reserve of food present in the endosperm. And that's why endosperm is very, very essential, and that should get grown up very properly. Then only embryo will get developed, otherwise not. ये एंडोस्पर्म के बिना एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती. तो इसलिए एंडोस्पर्म है वहां, isn't it? That's why endosperm is there. So देखो आप कहीं भी जाओ, anywhere you may go there for the tours and travels, कहीं भी जाओ, isn't it? या किसी सेमिनार में गए हैं या किसी यानी फुल डे जहाँ पे फंक्शन है, किस इवेंट में गए, मैरिज में गए हैं, any event is there organized by somebody for full day etc. तो वहां पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये अरेंजमेंट होना ही चाहिए. अब हम जाते हैं हमारे सोशल जो क्लब है, वहां पे रोटी क्लब है या लायंस क्लब है, लाइक दैट. तो वहां पे जब फुल डे रहता है तो स्टार्टिंग से दैट टी विल बी देयर, ब्रेकफास्ट विल बी देयर, फिर 3-4 घंटे डिस्कशन हो जाएगा, लंच विल बी देयर, फिर डिस्कशन हो जाएगा, हाई टी विल बी देयर, लाइक दिस. तो ये इसेंशियल है बिकॉज द एनर्जी इज रिक्वायर्ड देयर एंड द फीडिंग इज वेरी वेरी इसेंशियल. यानी उस जगह को छोड़कर हम तो नहीं जा सकते होटल देखने के लिए, रेस्टोरेंट देखने के लिए, तो इसलिए वहां पर ही वो अरेंजमेंट होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नरिशमेंट इज इंपॉर्टेंट, दैट नरिशमेंट इज गिवन बाय एंडोस्पर्म. समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल माय फ्रेंड. तो ये पीईसी जो है, दिस ट्रिप्लॉइड सेल अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स, no doubt that mitotic division, okay, and that produces a triploid mass, okay,
that multicellular mass is there produced, and that is called as endosperm. Okay, with cells having reserve food material, lot of reserve food material that can be used by the embryo cells. Okay, lot of food material is there and that is used by embryo, developing embryo. तो ये एंडोस्पर्म जो डेवलप होता है ट्रिप्लॉइड है, टेम्पररी है, that is formed by 3 methods. That 3 types of endosperm development are there. एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के 3 टाइप हम देखने वाले हैं. तो उनको क्या कहते हैं देखो, पर्टिकुलरली वन इज नोन एज दैट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर टाइप. Okay, the other is called as cellular type, and the third is known as halobial type. So most common is the cellular, that free nuclear type. नाम से ही पता चलता है. अब हमको मालूम है माइटोसिस डिवीजन जब भी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस इज देयर, यानी a single nucleus will divide into 2 daughter nuclei. Okay, so that is called as karyokinesis, and then after cytokinesis will take place. That means cytoplasm will also divide and that will form 2 daughter cells. That is called cellularization. तो पहले तो न्यूक्लियस को ही डिवाइड होना पड़ेगा और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, तो 2 सेल बन जाएंगे. तो यहां पे क्या होता है देखो दोस्तों, this free nucleus, triploid nucleus, that starts to undergo that division. 1 nucleus will produce 2, 2 will produce 4, 4 will produce 8, 8 will produce 16, and only free nuclei are formed in large number. वो कितने देर तक चलेगा मालूम नहीं. Okay, that depends or that varies from say that species to species or plant to plant. तो क्या हो गया है देखो, that only this triploid nucleus of primary endosperm has divided and it has formed large number of free nuclei. No doubt all that nuclei are also triploid. So only nuclear division has occurred first and then it is followed by साइटोकाइनेसिस. उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, यानी सेल्यूलर डिवीजन विल टेक प्लेस. तो जितने भी न्यूक्लिया है दे विल लेटर ऑन गेट चेंज और कवर्ड बाय दैट सेल्स, दैट पर्टिकुलर सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, एंड दे विल फॉर्म द सेल्स देयर. जितने भी न्यूक्लिया थे उनके सेल्यूलराइजेशन हो जाएगा एंड बाय दैट सेल्यूलराइजेशन the cells will be formed. Okay, and thus the triploid endosperm gets developed. Since it is developed in this way, it is called as free nuclear type of endosperm. यानी पहले न्यूक्लिया ही रहेंगे, उसके बाद में सेल्स आ जाएंगे, and now the cells are there. Okay, so they are also triploid, and this is known as what? This is known as free nuclear type of endosperm. So this is found particularly in maize, particularly in coconut. कोकोनट का तो एग्जाम्पल बहुत ही स्पेशल है. दैट टेंडर कोकोनट हम देखते हैं, एंड वॉट एवर दैट कोकोनट मिल्क वी आर यूजिंग एंड एंजॉइंग. ओके, वो टेंडर कोकोनट का वाटर आपने पिया होगा, कोकोनट वाटर. ओके, that coconut water is actually a free nuclear endosperm. Okay, ये जो कोकोनट का वाटर है, that coconut water has got free nuclei of endosperm in large number. तो अगर MCQ में पूछा जाता है that coconut water obtained from tender coconut is बायोलॉजिकली, तो क्या है?
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यह आंसर सही होगा। खाली एंडोस्पर्म दिया होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दिया होगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म दिया होगा, एम्ब्रियो दिया होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है उसका? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा? बहुत ही सिंपल है दोस्त। और बाद में उसके वाटर के अराउंड जो व्हाइट कर्नेल हमको दिखता है, जो हम खाते हैं वो खोपरा, हम मराठी में उसको खोबरों को बोलते हैं। ओके, तो वो जो है दैट फ्लेशी पार्ट, दैट व्हाइट पार्ट, उसे कर्नेल कहते हैं। दैट कर्नेल इज देयर सेल्यूलर एंडोस्पर्म। व्हाइट कर्नेल इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ये भी पूछा जाता है। ओके, कर्नेल जो रहता है कोकोनट का, वो क्या होता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और वाटर जो होता है वो क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सो पर्टिकुलरली सीबीएसई के बुक में यह है, तो एमसीक्यू उस पे बन सकता है। सो डोंट फॉरगेट दैट पॉइंट। ओके, देन सेल्यूलर टाइप में क्या होता है? ये नॉर्मल है, यानी पर्टिकुलरली न्यूक्लियर डिवीजन इमीडिएटली गेट्स फॉलोड बाय द सेल्यूलर डिवीजन। यानी एक सेल है, एक सेल के दो सेल इमीडिएटली बन जाएंगे, फिर दो सेल है, दो सेल के चार सेल बन जाएंगे, एंड पर्टिकुलरली द सेल्स विल बी फॉर्म्ड इमीडिएटली। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि पहले न्यूक्लियस बाद में सेल। ओके, वैसा नहीं। एंड दैट्स व्हाई द सेल्स विल बी फॉर्म इन लार्ज नंबर एट द सेम टाइम। जो नॉर्मल प्रोसीजर रहती है उसी पद्धति से, उसी प्रोसेस से, दैट न्यूक्लियर विल डिवाइड इमीडिएटली, इट इज फॉलोड बाय व्हाट इज दैट द सेल्स। ओके, and thus large number of the cells are produced. Okay, and the cells are since produced, cells produce at every division में सेल तैयार होती है। ये कम देखने में मिलता है इन सम डाइकॉट्स लाइक पेट्यूनिया। पेट्यूनिया जैसे कुछ डाइकॉट्स है, दैट उनमें ये दिखता है सेल्यूलर टाइप। और हेलोबियल टाइप में ये मिक्सचर है। इन हेलोबियल टाइप यू विल फाइंड दैट द न्यूक्लियस विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट and that will be immediately formed by two cells. It will divide to form two cells. Okay, तो शुरुआत तो सेल्यूलर टाइप से हो गई है, टू सेल्ड एंडोस्पर्म, पर इसके बाद में फ्री न्यूक्लियर हो जाता है। In every living cell which is formed there, nuclei are formed just as like in the first. Immediately cytokinesis नहीं होंगी वहां पे। Okay, and nuclei will be formed there, and then that free nuclei, once they are formed in large number, then they will get organized into the cells. यानी हाइब्रिड टाइप हो गया। इसमें कैसा होता? फ्री न्यूक्लियर में ओनली न्यूक्लिया फर्स्ट, one nucleus that will produce 2, 2 will produce 4, 4 will produce 8, 8 will produce 16, only daughter nuclei, followed by the cytokinesis later on forming the cells. ये फ्री न्यूक्लियर में हो गया, कोकोनट में हमने देखा। फिर ये क्या हो गया सेल्यूलर में? ये नॉर्मल रूटीन में जैसा होता है। फर्स्ट न्यूक्लियस विल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 डॉटर न्यूक्लिया, देन दे विल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल्स फॉर्मिंग दैट 2 डॉटर सेल्स। फिर 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 सेल्स ही बनते जाएंगे। और ये जो है तीसरा, ये हाइब्रिड है। यानी फर्स्ट 2 cells are formed by usual method. Nuclei will be divided, then organized into the cells. 2 daughter cells will be formed there first. But later on, every nucleus from that daughter cell will start division in free manner. And large number of the abundant number of the free nuclei are produced there. And then after they get organized into the cells. So इसे कहते हैं हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, एंड दिस इज शोन बाय द प्लांट्स ऑफ द सीरीज हेलोबी। हेलोबी नाम की एक सीरीज है ऑफ मोनोकॉट्स, इसमें ये दिखता है। ओके, सो आइदर, और तीनों का पर्पस तो एक ही है, दैट वॉट एवर द एंडोस्पर्म सेल्स आर फॉर्म, they will have abundant reserve of food material, and that food material can be utilized
for developing embryo. So I'm sure that you have understood this part very properly. MCQs can also be framed on that. So do prepare the part properly. Do give the likes and share to this video. And please subscribe to my XIIth Biology channel. Thanks a lot.